You had mentioned that you have chose CA form instead of CMA form. Why? You have mentioned a point in co-curricular activities. You rescued an injured bird during articleship and coordinated with the bird rescue team for its rehabilitation. Do you really think it is worth mentioning in resume for a job? Now there is a new, option on GST portal, that is the IMS. What kind of service it provides and why it is introduced in GST portal? After joining the company, if you got to know that one of your senior person is involved in unethical practices. So would you report it to the higher department, higher authorities or not, and why? There's no time for second meeting. Suppose you're selected. We are just negotiating on the final amount. You need to answer right now. Afternoon, Mohammed Ali. कैसे हैं आप? How are you? Yes, ma'am, I'm fine, ma'am. Thank you. Okay. Hello. So, Ali, please introduce yourself. Okay. First of all, thank you so much for giving me this opportunity to introduce myself in front of the panel. My name is Mohammed Ali, and I am recently qualified cost and management accountant and BCom honors graduate from Delhi University. I completed my articleship in both the domains taxation and costing field. During my tenure in cost accounting firm, I excel in many things like preparation of cost records, budgeting, variance analysis, and assisted in multiple cost audit assignments. During my tenure in a CA firm, I assisted in GSTR filing, TDS return filing, GST audit, and many things like that. I consider myself goal-oriented and self-driven personality. Apart from my academics, my hobbies are writing poetry and singing the song. That's all about me. Thank you so much. So, do you actually write poetry? Yes, sir. Great, great. After interview, we would listen something. So, Okay, sir. okay, first of all, tell me how you managed to scored so many exemptions in CMA. Okay. So I have scored many exemptions during the CMA course, and my favorite subject in final was SFM, Strategic Financial Management and Indirect Taxation. And you can see I have scored highest marks in that, 94 in indirect taxation and 78 marks in SFM, and I was honored, awarded by CN Nagendra Shah sir also for that. So I like to study SFM because the lectures were so interesting and practically inclined. So that's why I used to study. My so I have scored exemption. I am good in academic actually. So I also teach also some of my friends. So that's why I think. Taxation, right? Taxation you teach. Okay. Ali, Accounts. So, listen. Ali, you had mentioned that you have Yes, chose CA form instead of CMA form. Why? Actually, sir, firstly, I went in a CMA firm because our core area is cost accounting, cost auditing. But after working 6 months, I could not develop interest at that time. So I thought my core interest is indirect taxation. So that's why I choose a CA firm to work in GST field or indirect taxation. And we also have a scope in that field also. That's why I shifted. But yes, now I'm ready to work in any domain like cost accounting also. Okay. What do you say? So, first of all, I want to ask about the GST. You have a very good experience as an article in GST. So, you just tell Yes, me, what should GST be report? When should the GST be reported? Is it invoice date or payment date in case of services? in case of services. Yes. Ma'am, sorry, ma'am, I'm not able to recall it right now. I have to read it again. It's okay. It's okay. And now there is a new, option on GST portal, that is the IMS. What kind of service it provides and why it is introduced in GST portal? IMS.
Actually, I've not seen. Okay, it's To okay. update. It's okay. It's okay. Could you please tell me the difference between the GSTR1 or GST3B? Yes, ma'am. So actually, GSTR1 is the statement of outward supply of an organization, which is filed on the 11th of the next month. GSTR3B, where is it is a summary of outward supply and ITC al- uh, availment and with the payment of net GST liability, and which is filed on 20th of the next month. Okay. As you have keen interest in direct taxation, do you like explain or tell me some, recent changes in Income Tax Act? You just tell me in context of TDS. Okay, so talking about TDS, one of the changes which I can recall right now is the section 194I, which is related to tax deduction deducted. So TDS in case of payment of rent. So earlier limit was 2,40,000, but now it has been increased, I think, to 6 lakh. So limit has been changed, but other criteria is same. Okay. Any knowledge about the previously there are a lot of sections in TDS. You have seen like 192, 194, 193, and now there are only few sections. Are you able to recall some important Yes, ma'am. section of TDS? You can explain me that. Like section 194C, I remember. It's okay. It's okay. Raghav sir, over to you. Yes, Ali, you have mentioned a point in co-curricular activities. You rescued an injured bird during articleship and coordinated with the bird rescue team for its rehabilitation. Do you really think it is worth mentioning in resume for a job? Sir, yes, I think it is not directly relevant for the job, but I have mentioned it in co-curricular activities. It somewhere signifies that uh, I took initiative and handle that situation to save someone's life. So I think that is a positive point, which as a human or as ethical behavior. Good. And you are saying that you're punctual in your personality attributes. Anyone can get late anytime. How can you be so sure that you're very punctual? How can you, any example or anything? How would you justify that? Absolutely. Absolutely, sir. Anyone can get late according to the situation if situation is out of control. But as I have uh, taught uh, accountancy to 11th and 12th class also during my study uh, cost CMA in inter-level or final level as well. So that's why I'm punctual because I went to take class every day before time, before 5 minutes, so that I should not be late. Otherwise, a student can take it negative also. That's why I think I'm punctual, but I'm not claiming that I'm 100% punctual because situation can get out of control also sometimes. All right, sir, please. Ali, one more thing you have mentioned in your personality attribute that you have self-driven personality. How you would define it? Choose a self-driven personality. It means that we don't need because in starting we all need motivation from other side. But I think gradually I develop motivation, my purpose, my vision to uh, achieve my target. So I think from now onwards I don't need any motivation from inside. It is there inside of in me already to work properly and to achieve the aim. So that's And why. how you gradually develop this particular thing? Personality means you have mentioned that you have Sorry, gradually sir. developed this. You have mentioned that you gradually developed this Yes, sir. personality. How? Yes, sir. Sir, actually, during my inter, uh, one sir was there who has motivated me a lot, and he only told me that motivation should be from your inside only, because outer motivation cannot make you work for a longer time. So that in this way, I have built up. Mhm. Ali, I would like to ask two technical questions.
One is, what will be the journal Okay. entry for purchasing goods from an unregistered GST dealer? I mean, we are registered, but the supplier is not registered. We are purchasing goods from him. What will be the journal entry for purchase? So journal entry for purchase from unregistered entity would be purchase account debited to creditor account. No GST mentioning? No debit, no credit in GST? Actually, sir, we are purchasing from unregistered entity. So that's why I think no GST will because charge. Fair enough. The second question would be, you see in the tax audit, there are two forms, couple of forms connected together, 3CB, 3CD. What is the difference? I mean, are they same or are they different? What is the difference there? 3CB and 3CD. Right. You have done The tax audits, difference you have between mentioned this. 3CB and 3CD is yes, sir. So difference between 3CB and 3CD is that uh, 3CB is a I think part one where we mention all the details, and 3CB there are 44 clauses are there. So we mention detail like that. There's 3CA form also, and the difference between 3CA 3CB is if tax audit is compulsory as per Companies Act, then 3CB form is filed, and if it is mentioned on any other provision, then it is 3CA form. I think that All I'm right, not ma'am, remembering it please. correctly Yes. right now. No problem. Very. So, could you please explain what is EBITDA and what is EBIT? And for our company, as we are PCS company, so which performance parameter is more suitable for us for measuring the operating efficiency? Okay. The difference between EBITDA and EBIT is EBITDA is earning before interest, tax, and depreciation amortization, and EBIT is interest earning before interest and tax. So EBITDA comes before EBIT, and after deducting the depreciation and amortization, we reach to earning before interest and tax. Talking about TCS, as it is the largest IT service company, so I believe uh, EBIT will be the most relevant for us. Okay. So in Excel, you have already used VLOOKUP. What is the use of VLOOKUP in Excel? Okay, so VLOOKUP is a Excel formula, and we can use it for looking the any value from a large data, a large table, by giving the lookup value, I specified lookup value, and I used it in a CA form during my internship in a TDS working. Okay, if you want to analyze the data like big data in Excel, what type of a function, or you can say a feature you use for the data analysis in Excel? Actually, if I talk about, as I have mentioned that I have worked on TDS 24Q, which was the large data of employee of a reputed college, and there we used they earlier used to do it manually, but when I engaged in that work, I applied the VLOOKUP formula because by the PAN number of the individual we were used to look the other details like name and TDS deduction and like that. So I applied VLOOKUP in that, which reduced the time by 80% and increased the efficiency of that work at that time. VLOOKUP just used for fetching a data from the big data. I'm talking about if you want to analyze the data, perform analysis, which type of a feature is more useful in Excel? Analysis. Analysis, So data for analysis. analyzing the data, it differ from our purpose of what kind of a thing we are looking for the data analysis. So we can apply different things like filter. We can analyze also if we want to analyze like different category, then we can apply the filter also. We can do the conditional formatting for the different data. Like that we can analyze, I think. Okay, so Ali, after joining the company, let's suppose we consider an assumption. After joining the company, if you have got to know that one of your senior employee, senior person is involved in unethical practices.
So would you report it to Okay. the higher department, higher authorities or not, and why? Okay. So One of your if senior, I one came of to your know senior. about this, okay. So if I came to know about this situation, first of all, I would like to analyze it properly because it seems to be unethical for me only, and I might be wrong. So first of all, I would like to analyze it with different point of view. And if it is find that unethical, I can talk to that senior person also to understand what is the situation, why he is engaged in that, and if needed, I can bring the in the notice of other person also, like if it is going to affect our company in a large impact. That's why I need to report that also as well. But first of all, I would like to talk with him why he's doing it, and I will try to stop him without exaggerating the thing and making that. So on the same question, I had other question. If you had an option to choose between trust and success, what would you prefer? Okay, very difficult question, sir, but I think if there is a decision making between trust and success, I think I should choose trust because without trust, success can be bigger, but success can't be, for a longer time because trust is the basic foundation of a success. Okay. You are basically from New Delhi, or any other place? You are Ma'am, actually, I born in Bihar. Yeah, I born in Bihar, but brought up in Delhi. I brought used to went up. to Okay. Bihar in 1 year or 2 years. What do you like most about Delhi, or which thing you don't like about Delhi? Which thing I don't like about Delhi is, I think, most popular opinion is that population, increasing population, which I don't like, and the situation is getting worse day by day. And what thing I like about Delhi, actually, I brought up in Delhi. So since my childhood, my friends are here only. Many places we used to go there to refresh myself. So that thing I like about Delhi because when I went Bihar, I feel lonely because my all friends are here only. So Okay. that's I It's like. not a specialty about Delhi, it's about your friends. There is nothing about Delhi, right? Yes, but they are located in Delhi only. So and Okay. many memories are intacted with Delhi actually, childhood Hmm. memories, and that's Okay. all. And any place which you like would recommend to others whenever they been to Delhi, like you like the most the place in Delhi. Is there anything about that? In, कुछ भी हो okay, सकता है. so in Delhi, अक्षरधाम मंदिर हो I सकता could है. recommend is India It Indian can be anything. Habitat Center. Actually, during my yes, ma'am. Actually, during my IOTP before CMA final, there is IOTP Industry Oriented Training Program which is conducted by ICMI. So I went to with my friend, CMA colleague only. I went to Indian Habitat Center, IHC. So I found it very very beautiful infrastructure, and their show is also going, which is free theater. So that's that, and in the evening the views is very beautiful, green trees are there, so I found it very delighted. So I think I will also go again, and if someone is asking me to recommend, I will recommend that one TCS will also give you a for sure. beautiful office if get selected. Okay, sir, I'm looking forward to it. So Ali, what would your preferable place, a preferable location, if you got an opportunity to join our company? Are you okay for Sorry, sir, I could relocation? not hear. Can you please repeat? What would be your preferable location Yes, sir, if you I'm got an ready to relocate. My prefer my preferable location would be Delhi only because I am familiar to it. But yes, I am ready for relocation if it is important for my exposure. Because right now I am only having the bookish knowledge of my CMA course, so I want practical exposure to enhance my practical knowledge. So if it is
important for that. So I'm ready for relocation, but it should be supported by safety and salary structure also. Then it would be good. Can we talk about compensation? Location, we can disclose. Sir, we have a location in Pune. Are you comfortable with Pune? You all like your all friends are in Delhi, but if we like relocate you to Pune, is it comfortable for you? Yes, ma'am. As I said, if it is necessary for the practical exposure and all my growth, overall growth, so I'm ready for relocation. And if I talk about my friends, so I'm amiable by nature also. So I will definitely make friends in Pune also with a great All connection. right. How much is your expected amount that would be a package in future if you get selected in TCS? What are your expectations? Okay, so as I'm a newly qualified cost and management accountant, I think whatever the package would be, that should be matched with the company norms and as per the industry structure. No, the company norm can And go I should be anything. paid accordingly The to that. company norm can go below 4 lakh, 5 lakh, whatever. What are your expectations? Okay, so I my need number. expectation is uh, okay, sir. So my expectation would be 12 LPA, 1 lakh per month. It is my ideal expectation. Fair enough. If we offer a reduced package but will give you Delhi location, what would you choose? Delhi location with less salary or Pune location with salary might be comparative to your expectation? So, sir, during my course, I have been taught about cost and benefit analysis. I will apply that. I will definitely consider all the positive and negative points for both the option, and whichever option will have the more positive points, I will definitely select that after considering all the things, expenses and salary. Let's disclose the amount for Delhi also, sir, and Pune. So for Delhi, the amount will be 7 lakh per annum. And for Pune, sir? For Pune, it would be 12 lakh per annum. This is the amount. Great, you're getting 12 as expected, but in Pune, and you are getting 7, 5 lakh less than your expectation, but you'll be in Delhi. Okay. Tell me. So as I said, I would like to have analyzed the all the things related to it, because if I relocated to Pune, I'll have to take a house for rent also. So, but in Delhi, I have my I live with my parents, so that expenditure will not be incurred in Delhi. So according to that, I will analyze. If after adding the No, expenditure, if Delhi, yes sir. there's no time for second meeting. Suppose you're selected, we are just negotiating on the final amount. You need to answer right now. Accommodation we can consider. Okay, TCS can give you accommodation if needed In Pune. in Pune. okay, Obviously, only in Pune. okay, sir. So other things is remain same, like position or exposure. Profile, right? The profile, the job description, everything remains same. Only the location, because Yes, sir. we have openings at both the places. You do have a right to choose right now. Okay, sir. So I'm ready with Pune location. All right, great. Okay. Good. One poetry that you would like to recite for us, Irshad. Okay, sir. So actually, I'm not prepared. Let me think just. Any couplet of your choice. Okay, okay, sir. Okay, so let me tell you one two-line poetry. एक नई तरकीब हमने निकाली है, एक नई तरकीब हमने निकाली है, गम में मुस्कुराने की आदत डाली है. So that is one of my favorite. Beautiful. 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 Ali, thank you. Thank Ali. you. Let's come to the feedback now.
Yes, sir. Thank you, ma'am. Stop. Thank you, sir. Yes, sir. हाँ सर, मैंने जो अली से पूछा ना, तो अली से मैंने जो पूछा उसमें मुझे जो रिप्लाई मिले, फर्स्ट जो मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे कि अगर कंपनी ज्वाइन करते हैं, तो आपने उसका रिप्लाई सही किया, क्योंकि नॉर्मली जब अपने पास में क्वेश्चन को पूछते हैं ना हमारे पास में कि सीनियर के बारे में, तो वहां पे बेसिकली वहां पे रिप्लाई चाहिए होता है आपका लॉजिकल आंसर, और आपका एक्चुअली मीन्स कि आप उस चीज को डिफाइन कर पा रहे हो। तो वहां पे दो चीजें मैटर करती हैं, रेस्पेक्ट, कि सामने जो आपका सीनियर आपने उसकी रेस्पेक्ट भी मेंटेन किया, और साथ ही साथ में आपने कंपनी की जो पॉलिसी है उसको भी वैल्यू किया, तो वो आपने बेटर किया। ठीक है सर। इसके अलावा सर अगर मैं इसमें बात करूं, तो सक्सेस वाले Yes. पार्ट में भी इन्होंने स्टार्टिंग वहीं से किया कि मीन्स कि ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है, ऑब्वियस किसी भी इंसान के लिए डिफिकल्ट क्वेश्चन बनता है ये वाला पार्ट, तो वहां भी उन्होंने इसको प्रॉपर तरीके से संभाला। तो मेरे मैंने जो क्वेश्चन पूछे उनका रिप्लाई मुझे प्रॉपर वही मिला जो मैंने एक्सपेक्ट किया था। अपार्ट फ्रॉम दिस, अब यहाँ पर Thank you, sir. जैसे मैम ने भी क्वेश्चन पूछे, हाँ, वो मैं तो थोड़ा सा बात हाँ करूंगी। अली, यू आर ए CFM स्टूडेंट, राइट? मैम यस, CFM मैंने ज्वाइन किया है, अभी रिसेंटली ज्वाइन किया, अभी मैंने तो मॉड्यूल 1 पर ही हूँ, अभी ज्यादा मैंने आगे कंटिन्यू किया नहीं। वही देखो, योर कॉन्फिडेंस इज वेरी गुड, द प्रॉब्लम इज विद योर टेक्निकल स्किल्स, Right. right? Yes, ma'am. Because you have written Yes. lot about your technical skills like TDS, GST, and about VLOOKUP, pivot table, but you are not able to give a answer. Only Even the on problem, small things. small things, Yes. जो कि आपके फर्स्ट मॉड्यूल में ही CFM के कवर किया गया है। देखो, हमेशा जब भी आप ये सारी चीजें लिखते हो ना, लाइक GST फर्स्ट मॉड्यूल में ही IMS आपको काफी अच्छी तरह से समझाया गया है। एंड इफ आई टॉक अबाउट कि आपका पिवट टेबल क्या होता है, ठीक है, अपने यहाँ पिवट टेबल लिखा है। जब भी आप कुछ लिखते हैं ना, फर्स्ट ऑफ ऑल उसके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लें कि वो क्यों होता है पिवट टेबल फॉर द डेटा एनालिसिस। मैं आपको बार बार बोल रही थी डेटा एनालिसिस, क्योंकि आपने यहाँ पर पर्टिकुलरली Okay. इसको मेंशन किया था, तो इंटरव्यूअर वो उसको देखेगा कि आपने Yes, लिखा है, ma'am. तो आपको पता है ये टूल क्यों यूज होता है। ठीक है, तो कहीं ना Yes, ma'am. कहीं आपको थ्योरेटिकल नॉलेज बहुत अच्छा है। वो आपको CFM दिया ही इस वजह से गया था क्योंकि हम टेक्निकल में कहीं ना कहीं लैग करते हैं, बिकॉज देयर इज अ गैप। वो गैप अभी भी आपने फिल नहीं किया। ठीक है, तो वो आपको, Yes, ma'am. क्योंकि ये बहुत ही नॉर्मल चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, जो जैसे कि अभी इनकम टैक्स, न्यू इनकम टैक्स आया, तो उसके लिए 5 मिनट्स का वीडियो भी CFM यूट्यूब चैनल पर है कि TDS के कौन कौन से सेक्शन चेंज हुए, क्या क्या न्यू चीजें आई हैं। वो 5 to 6 मिनट्स में आप जान सकते हो। तो वहां पर थोड़ा सा मुझे मैम वो जो जहां आप तक लगता है, पूछ रही थी न्यू सेक्शंस आए वो हैं नया जो TDS में। सेक्शन है वो न्यू सेक्शन के अकॉर्डिंग। हाँ, ओके, न्यू सेक्शंस आप जो तो बोल उसके रहे थे अकॉर्डिंग प्रॉफ। देना था। हाँ जी बेटा, हम्म, क्योंकि 3 नए सेक्शंस हम्म, आए हैं, वो क्लियरली वहां बताया हुआ है। अगर आपने TDS के बारे में यहाँ लिखा हुआ है ना, एंड यू ऑलरेडी मेंशन के आई हैव अ हम्म, कीन इंटरेस्ट इन डायरेक्ट टैक्सेशन, इनडायरेक्ट टैक्सेशन, तो आपको इंटरव्यूअर ना उसी पर क्वेश्चन पूछेगा कि अगर इतना इंटरेस्ट है तो इसको लेटेस्ट अपडेट पता होनी चाहिए। ठीक है, तो यस मैम। आपको लेटेस्ट जो था ना, जो कि आपको बहुत ही जब भी CFM में जब भी ये न्यू आता है ना, तो ये सारा कुछ CFM यूट्यूब चैनल पे आपको मिलता है। तो आपको थोड़ा सा अपने आप को अपडेट करना चाहिए था। आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, अगर ये चीजें कर लेते ना, आप 12 LPA क्या, आप इससे बहुत ज्यादा जो है यस कह लो कि आप अपनी वो रख सकते हो कि भी मुझे तो 15 to 16 चाहिए। बिल्कुल। Because 10 to 12 is the एग्जैक्टली average. एवरेज। You are a exceptional student. Like, see कि आपने 20 में से 17 में जो एग्जाम्शन, बच्चों से CMA क्लियर नहीं होता, आपने एग्जाम्शन स्कोर किया है। आपको सिर्फ अपने वीक एरिया में काम करना था, वो आपको कहाँ से कहाँ तक लेके जा सकता है वो आप में अभी भी लैक कर रहा है, उस पे आप थोड़ा सा फोकस करें। और ठीक वो है? भी आपको डिटेल्स में नहीं जाना, जो Yes. टेक्निकल कीवर्ड्स आपने रिज्यूमे में लिख रखे हैं, हाँ, एग्जैक्टली। उतना पढ़ लो। बस उतना उतना आपको पता होना चाहिए। IMS मैम ने पूछा, सपोज यू डिड नॉट हैव एन आइडिया अबाउट दैट, इवन देन यू कुड हैव जस्ट स्पोकन द फुल फॉर्म ऑफ IMS, राइट? वो भी थोड़ा सा कुछ तो आप, बट हाँ, जैसा सर ने बताया कि जब आपको सवाल का जवाब नहीं आता तो आपका कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन, वो सब अच्छा है। एक्सेप्शन हैंडलिंग आपकी बहुत बढ़िया है कि मेरे को आंसर नहीं आता, जबकि जैसा मैम ने बोला, योर कम्युनिकेशन, योर कॉन्फिडेंस, एवरीथिंग इज गुड। जब आपसे पूछा गया वो बर्ड वाला क्वेश्चन, वंडरफुल आंसर था वो। मतलब कोई और जवाब देता तो शायद फंबल होता, बट योर आंसर इज गुड। तो मैम ने जैसे बताया, रिज्यूमे के जो कीवर्ड्स हैं
उसको आप थोड़ा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करके जाओ, ठीक रहेगा सर। अली से पता क्या होता है, मैं आपको दो चीजें बताता हूँ यहाँ पे। देखो दो चीजों पे Yes, बताता sir. हूँ। एक, जब हमारा रिज्यूमे होता है ना, लेट Okay, सपोज sir. अगर हम इंटरव्यूअर हैं, ठीक है, इंटरव्यूअर आपको, आप जो पहली चीज आपके बारे में जानता है ना, वो जानता है आपके रिज्यूमे से, जो आपने इसमें लिखा है। पर्सनली कोई आपको नहीं जानता, समझ रहे हो? आपका पर्सनली जानना हमारे लिए क्या है, आपका रिज्यूमे। तो अगर आपने इसमें अपना स्कूलिंग भी लिखा है ना, स्कूलिंग में क्या किया, कितना सेट मार्क्स आपने लिया, या यहाँ जो आपने अपना वर्क एक्सपीरियंस लिखा, क्या आपने सीखा है, तो एटलीस्ट इस चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन हमें इसलिए इसमें पॉइंट ऐड ऑन नहीं करने जो हमें पता ना हो, ठीक है। तो उसके लिए एटलीस्ट प्रिपेयर रहो, नंबर वन। नंबर टू, जब आपसे पूछा गया, जैसे आपने भी बोला 12 लाख पर एनम, सर हमने रैंडम किया, तो ये मान के चलना इंटरव्यूअर आपसे उस चीज को नेगोशिएट करेगा, ठीक है। जैसे मान लो हमने तो बोल दिया कि भी ठीक है, Hmm. हमने डायरेक्टली कम किया उस पार्ट को, क्यों? क्योंकि आपने बोला ही 12 है। ऑब्वियस सी बात है, जब पर्सन एक्सपेक्टेड कर रहा होता है कि इतना भी 12 लाख पर एनम चाहिए, तो कंपनी की कैपेसिटी चाहे 15 लाख की होगी ना, 20 लाख की भी होगी, वो आपको कम पे लेके आएगी, ठीक है। तो प्लीज अपने, जो आपने पता है आपके बारे में, आपको आइडिया मिल जाता है। देखो होता क्या है ना, जैसे एक इंटरव्यू से आइडिया मिल जाता है ना, ऐसे करियर को भी आइडिया मिल जाता है कि इसकी ये टीम जो है मेरे को लिए कितना पॉजिटिव, कितना नेगेटिव है। और जब आपकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है तो 12 तो एवरेज है, आप अच्छा मांगो। थर्टी अच्छा, सिक्स लाख वॉज द हाईएस्ट पैकेज लास्ट ईयर। लिटिल यस, आप अच्छा हाई Yes, पैकेज sir. So, डिमांड sir, करते उसका हैं। आंसर क्या होना चाहिए, सर? अगर इंटरव्यूअर पूछे अगर यही क्वेश्चन, तो क्या आंसर होना चाहिए? नंबर देना है, बिल्कुल नंबर देना है। इट कुड बी हम्म, 18 lakhs, इट कुड बी 20 lakhs, इट हम्म, कुड बी 24 lakhs, हम्म, बट वो नंबर आप देना है। पता चल जाएगा जब आप इंटरव्यू फिनिश करोगे कि आपने कितना कॉन्फिडेंटली आंसर आंसर किया किया। है। उस पर आपका ये जो है पैकेज चेंज होगा। जैसे एग्जांपल के लिए आपने एक आंसर दिया कि जो Hmm. आपकी कंपनी की पॉलिसी है, जो उसके अकॉर्डिंग जो बेटर रहता है, वो मैं चूज करना पसंद करूंगा, तो दिस इज डिप्लोमेटिक आंसर। बिल्कुल। तो इसमें आंसर में क्या होता है ना, आपके पास नंबर होना चाहिए, पहली बात तो, ठीक है। और वो नंबर आप भी, आप इंटरव्यू देते समय, जैसे इंटरव्यू लेते समय इंटरव्यू को पता होता है कि नंबर क्या बोलना है हमको, जैसे आपको भी आइडिया मिल जाता है कि मेरा इंटरव्यू कैसा जा Hmm. रहा है। आप उस नंबर को उस सेम टाइम पे अपने माइंड में बढ़ा सकते हो। नंबर वन चीज, ठीक है, कि मैं इतना बोलूंगा, ये एक्सपेक्ट करेंगे। नंबर टू, जिस कंपनी के लिए आप जा रहे हो, उस कंपनी के बारे में एटलीस्ट एक आइडिया निकालो, वहां पे एवरेज क्या चल रहा है, बिल्कुल सही। ठीक है। एवरेज क्या चल रहा है और मेरी जो परफॉर्मेंस है वो कैसी जा रही है, तो मैं जो डिमांड करूंगा वो एक्सपेक्ट करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, नेगोशिएट तो होगा ही होगा, ठीक है। और जब Yes, फर्स्ट sir. आपके पास एडवांटेज, आपके पास में आपके जो मीन्स देख रहे हो, देख पा रहे हैं आपके क्रेडेंशियल जो है वो बहुत काफी अच्छे हैं, तो ये आपके लिए एक बेनिफिशियल पॉइंट है जहां पे अपनी पार्ट को मेंशन कर सकते हो। और नॉर्मली जब अपने आप फिगर को मेंशन करते हो ना कि मुझे इतना अमाउंट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, एंड रेस्ट ऑन यू गाइस, मतलब आप छोड़ते हो उस चीज को लेके, तो वहां पर एक तरीके से आपके वर्ड्स में कॉन्फिडेंस दिखता है, क्लैरिटी दिखती है कि आप क्लियर हो अपनी चीजों को लेके, तो वो चीज अपनी मेंटेन करना स्टार्ट करो आप। राहुल सर। ऑल राइट, दैट्स ऑल सेम फ्रॉम माय साइड। ओके सर। और गुड टू सर नो। मतलब थ्योरेटिकल टेक्निकल स्किल में सर, मतलब वही एक्सेल और डेटा एनालिसिस, जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर वाला पार्ट, उसी पे वर्क करना है। आप, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको फिर 20-25 आवर्स लगाने हैं। जो रेज्यूमे में पॉइंट्स मेंशन हैं, उसमें जो यस सर। कीवर्ड्स आपने लिख रखे हैं, बस वो आपको अच्छे से पता होने चाहिए। और सीएफएम में आपको तो इतना बेनिफिट है कि हर लेक्चर के आगे लिखा हुआ है कि वो पॉइंट आपको कहाँ समझाया गया होगा। तो वहां से आप रेफर कर लो, जो भी न्यू इनकम टैक्स एक्ट हुआ है उसमें क्या क्या सेक्शन चेंजेस हुए हैं, वो सीएफएम यूट्यूब चैनल पे एक बार जाके लेटेस्ट वीडियोस देख लो, हम देखा है तो मैंने। ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एंड वन मोर थिंग अली, मैं आपको बताना चाहूंगा आपके बारे में, जैसे आपने रिज्यूमे बनाया, ठीक है, रिज्यूमे काफी अच्छा बनाया आपने, ठीक है, बट स्टिल इसमें कुछ एक वर्ड्स है जिन्हें आप अपने पास चेंज कर सकते हो। जैसे आपने यहाँ पे अपनी क्वालिफिकेशन यस सर। एजुकेशन लिखा है, तो यू कैन यूज द वर्ड क्रीडेंशियल्स, यू कैन कुछ वर्ड्स को रिप्लेस कर दो, ठीक है। क्रीडेंशियल या ओके। एकेडमिक क्रीडेंशियल्स होते हैं, ठीक है, आपने मेंशन करते हैं एकेडमिक्स के अंदर कैसा है आपका, मीन प्रोफेशनल डिग्रीज में आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है। साथ में आपने अपना मेंशन किया वर्क एक्सपीरियंस, क्योंकि तीन टाइप के रिज्यूमे होते हैं, ठीक है। फंक्शनल होता है मेनली, स्टार्टिंग वाला पार्ट हमारा फंक्शनल होता है, मेन हमारा फंक्शनल वाला पार्ट चलता है, ठीक है। फंक्शनल और डायनेमिक होता है हमारे पास में। मेन पॉइंट क्या है ना, आपने नीचे वर्क एक्सपीरियंस मेंशन अच्छा किया, टाइमिंग आपने क्या क्या सीखा, क्या मेंशन किया, ठीक है। बट पॉइंट इज, कुछ जो वर्ड्स हैं उस पे थोड़ा फोकस करो ताकि और रिप्लेस हो सके। दूसरा पॉइंट, जैसे स्किल वाला पार्ट है, स्किल आपको आपने सीखी है, आप सीएफएम कर रहे हो, आपने सीएफएम में चीजें करी हैं, तो उनको हाईलाइट करो, ठीक है। जैसे आपने वर्ड्स मेंशन कर दिया कि कॉस्ट एंड वेरिएंस एनालिसिस लिख दिया मैंने, तो काइंड ऑफ आपने कोई टैबुलर फॉर्म नहीं बनाया, यू कैन मेक ए टैबुलर फॉर्म इन नेक्स्ट पेज ऑल्सो, ठीक है। तो स्किल को ओके। हाईलाइट करो, आपने हाईलाइट कम किया हुआ इसके अंदर, बाकी रेस्ट रेस्ट इज गुड सर। राइट। बस ओके, अपना मतलब थोड़ा सर सा वो जो स्किल्स वाला वर्क पार्ट कर है लो। उसका मैं अलग सेक्शन, सेक्शन ही तो हम उसको वो हाईलाइट करो, नंबर वाइज हाईलाइट जो नहीं हो रहा है वो दब दूसरा जा रहा है, सेक्शन। हाँ। हम्म। ओके। एक जो एक अपना इफेक्टिव रिज्यूमे होता है ना स्टार्टिंग में, वो 2 पेज तक जा सकता है, आपने 2 पेज का बनाया है, ठीक है। और उस 2 पेज के अंदर अपना जो सेकंड नीचे वाला पार्ट है ना वो दब रहा है नीचे, तो उस पार्ट को आप हाईलाइट कर सकते हो ऊपर या बाद में।
ओके सर। और सर पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो रहने दूं या हटा दूं नहीं, वो इन्फॉर्मेशन लास्ट में होनी जो चाहिए है? आपके पास में। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपने मेंशन किया, डेट ऑफ बर्थ क्या है, नेशनलिटी क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या है, जेंडर क्या है, वो होना चाहिए। और साथ में ऐड ऑन कर दो ऑल्टरनेट नंबर। रिज्यूमे के अंदर लास्ट में ओके। आपके एक नंबर आपने स्टार्टिंग में दिया होता है, यहाँ नंबर दिया होता है, नंबर टॉप पे दिया होता है, ठीक है। हाँ। एक नंबर अपने लास्ट में मेंशन करो, ऑल्टरनेट नंबर कौन सा है आपका। ओके सर। हम्म। ओके सर। इसके अलावा नहीं हॉबीज, नहीं, सर बाकी करियर सब ऑब्जेक्टिव जो बाकी सब समरी वो परफेक्ट, ठीक है, प्रोफेशनल समरी? ऑल इज परफेक्ट, ऑल इज परफेक्ट। ओके। यस। थोड़ी सी मेहनत कर मैं लो, बहुत अच्छे नर्वस था पैकेज पहले, पे अभी चले। कैंपस मैं बहुत नर्वस था एक्चुअली, बट अभी अच्छा लग रहा नहीं, है बहुत इंटरव्यू। अच्छा किया आपने। एक्सरसाइज हुई इसलिए कि नर्वसनेस खत्म हो जाए। यस सर। यस सर। ठीक है। और ओके सर ओके। दूसरी बात, ये ऑलराइट। कैंपस प्लेसमेंट का भी शिफ्ट हो गया है इनका। एक दो चीज और पूछ लूं सर? हाँ हाँ, हाँ, श्योर श्योर प्लीज श्योर। प्लीज। अब कैंपस प्लेसमेंट तो अभी 5 से 7 मई को होगा, अगले महीने होगा। शिफ्ट हो गया, अभी 20 तारीख को होने वाला था, पर वो अगले महीने होगा। कैंपस में तो वो पहले से ही डिस्क्लोज करते हैं जो भी सैलरी पैकेज होता है। अभी मैं ऑफ कैंपस भी अप्लाई कर रहा हूँ, तो एक जगह से भी कॉल आया था, उसका भी आज ही इंटरव्यू था, लेकिन वो भी रीशेड्यूल हो गया, कल होगा। सिग्नलिंग प्रोजेक्ट कॉस्टिंग का जॉब डिस्क्रिप्शन है, कॉस्टिंग प्रोफाइल का है। तो उसमें जो है मुझे सैलरी पैकेज उन्होंने पूछा था, एक्सपेक्टेशन ही। तो मैंने लगभग, क्योंकि उनका कॉस्टिंग प्रोफाइल का उनका मैंने चेक वेक किया था, तो वो 7-8 के आसपास ही था, तो मैंने भी लगभग इतना ही बोला, 9-10। तो उन्होंने कहा कि सीए को जब हम हायर करते हैं तो हम देते हैं 8 या 9 लाख, सीएमए को हम हायर करते हैं तो 6.5 देते हैं, 6.5 या 6। तो मैंने फिर भी इंटरव्यू के लिए तो मैंने बोल दिया है कि आगे करते हैं, ताकि एक प्रैक्टिस भी हो जाए। लेकिन सर ज्वाइनिंग के लिए मेरे को कंफ्यूजन है थोड़ा, क्या करूं मैं, ज्वाइन कर लूं या कैंपस का वेट करूं? एक तो जो सैलरी का अमाउंट जैसे उन्होंने काउंटर आंसर किया कि हम उसको इतना देते हैं तो तुमको इतना देंगे, वो बस बोलने का होता है। आप भाई, वो तो आपको हम्म। नेगोशिएट करना है ना। आप पलट कर बोल दो कि भाई हाँ चलो ठीक है, तो बस मैटर खत्म हो जाएगा उनके लिए। तो इट्स सो गुड टू हायर समबडी इक्विवेलेंट, और कम पैसे भी मिल जाएगा। सेकंड, as you said, in campus placement the salary package is already specified, that agreed, but still you should say your expectation a little higher than the amount specified, क्योंकि वो तो कम लिखते हैं ज्यादा ओके। देते हैं। कितनी बारी ऐसा होता है, वो बोलेंगे हमारा जो अमाउंट है ऑफरिंग वो 8 लाख की है, बट what really happens when you go inside, the interview goes good, the package increases। तो आप अपना एक्सपेक्टेशन वहां पर अच्छे से ही बात करना। बात रही इसकी कि ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं, दिस इज द पॉइंट वेयर यू शुड यूज दैट कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस। यू विल हैव टू एक्चुअली कंपेयर योरसेल्फ। इट हैपेंस एज अ चैलेंज विद मेनी पीपल अराउंड एवरी ईयर। वो ऑफ कैंपस पहले हो जाता है, बच्चा ज्वाइन कर लेता है, बट स्टिल ही गोस टू द कैंपस टू कंपेयर कि मैं क्या करूं। तो मेरे को लगता है, मतलब आई मीन छोड़ना तो नहीं चाहिए, बट छोड़ना हाँ, नहीं चाहिए। छोड़ना नहीं चाहिए, अपना एनालिसिस कर लो, नेगोशिएट कर लो उस चीज के ऊपर। आई रिकमेंड यू। मतलब ऐसा नहीं उन्होंने बोला कि हमारा लेवल ये है, ऐसा नहीं ओके। होता। ठीक। आप वहाँ पे मेंशन कर, अपनी जो अपनी चीजें हैं आपने मेंशन कर सकते हो, नेगोशिएट का बेस बना सकते हो अपने पास में, कि मैं ये चीजों में आपकी हेल्प कर सकता हूँ। जो आपके पास में एक्सपर्टीज है ना, देखो नॉर्मली क्या होता है ना, यहाँ पर एक्सपर्टीज आपके पास उस चीज की नहीं कि आपने काम किया हुआ है। एक्सपर्टीज आपके पास इस चीज की है कि मैंने जो चीजें मैंने सीखी हुई हैं, इसको मैंने इंप्लीमेंट किया हुआ है। ठीक है, तो मैं इस चीज में आपको ये एडिशनल दे सकता हूँ सर, या आपकी मैं हेल्प कर सकता हूँ। आप उनकी जब बोलोगे ना, तो होता क्या है, अभी वो आपको कन्विंस करने में लगे हुए हैं, हाँ, उल्टा चले जाओ, वो रिवर्स चलो। हम्म। अब आप उन्हें कन्विंस करो, तो देखो ऐसा है, मैं इसलिए एक्सपेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये सब चीजें आती हैं, मैंने इस पे काम किया है, और ये आपके लिए भी आपकी कंपनी के लिए बेटर रहेगा। ठीक है, तो हम इसको वहां सेट करते हैं जहां पे ओके। हमारा एक, आपको भी वो लगे मुझे भी वो लगे, हम एक बैलेंस पे लेके आते हैं। तो बिल्कुल। बीच में बैलेंस पे लेके आओ। बाकी आप कंसिडर कीजिए सर ने जो बोला आपको, कि अपने कॉस्ट एंड बेनिफिट अपने चेक कीजिए आप। और क्या क्वेश्चन है आपको अली? मैम ये बेस्ट मॉक ऑफ लक। इंटरव्यू और भी हो सकता है बाद में, या ये मतलब एक ही टाइम, वन टाइम ही था ये? अभी जैसे कि कैंपस प्लेसमेंट हमारा शिफ्ट हो गया है, तो वी विल ट्राई कि हम अदर मॉक इंटरव्यू आपके साथ कंडक्ट करें, सो दैट उस टाइम आप अपने आप को एक इम्प्रूव्ड वर्जन में लेके बिल्कुल आए। बिल्कुल, यू कैन वर्क यस अपॉन एंड वी मैम। कैन अगेन मीट, नो इश्यूज। ओके। ओके, ऑल द यस वेरी मैम। बेस्ट। ओके। ऑल और द मैम ये वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, ये मुझे मिल सकती है क्या, ताकि वो दोबारा से क्वेश्चन वगैरह हाँ देख हाँ के हाँ, उसको प्रिपेयर कर पाऊँ, बिल्कुल अगर ऐसा बिल्कुल, मिल पॉसिबल जाएगी। हो तो? डेफिनेटली Right. डेफिनेटली श्योर। मिल जाएगी। ओके। ओके, ओके। थैंक गुड यू। गुड गुड। थैंक थैंक यू यू। सर, थैंक यू मैम, थैंक यू सो गुड। मच।